Gee, so today we are going to attempt some questions for acids and bases based on all the concepts that we have studied. उसके ये worksheet मैंने आपके साथ share कर दी है. You should obviously go through it. And after this, we will do some tests that I've given in the school, ताकि you know what kind of questions are asked. Although all of these are from past paper questions. Okay, so let's start. First question: acids react with bases, carbonates, and metals. We know that with bases they produce salt and water. With carbonates they also produce carbon dioxide. And with metals, they release hydrogen gas. These are the three main things, right? So which of these reaction produce a gas? Carbon dioxide किस produce होती है कार्बोनेट के साथ और मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, बट बेस के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं होता. So that's why we'll say it is only C, because that is where carbonate साथ CO2 or hydrogen from the metal. The position elements W, X, Y, and Z are shown. ठीक है. We can see from here it's in group 1, this is in group 2, but ये काफी नीचे है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा. एंड सिमिलरली ये ट्रांजिशन मेटल में आता है. ठीक है. एंड Z is in group what? 5. Which elements form basic oxides? अब basic oxides are basically made from metals. तो मेटल से जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं. सो यू कैन सी W, X and Y आर ऑल मेटल्स, जिसकी वजह से हम कहेंगे A. नाउ इट इज पॉसिबल कि कोई मेटल जो है वो एम्फोटेरिक बना ले, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें नहीं पता X कौन सा है, Y कौन सा है, तो दिस इज द बेस्ट चॉइस दैट वी हैव. Carbon dioxide is produced when dilute HCl reacts with. So carbon dioxide should be produced when acid reacts with carbonate, right? Now, with copper metal, acid react नहीं करता, ये हमें पता है. Because if I add copper to HCl, reaction does not happen because copper is less reactive than hydrogen, जिसको उसने displace करना. But यही copper अगर carbonate से react already कर चुका हो, then the reaction will happen because now it's not copper metal. That is the interesting thing. This is not copper metal. This is copper ion. और आयन तो ऑलरेडी आयनाइज हो चुका है, उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके हैं, सो दैट्स व्हाई इट कैन रिएक्ट. बट इसने तो अभी इलेक्ट्रॉन लूज करने, सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट रिएक्ट. सो द क्वेश्चन इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बोनेट. वो तो हमें पता है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए दैट कॉपर मेटल विल नॉट रिएक्ट, but copper compounds can react with acids. It can be copper oxide, can be copper carbonate or other things. Which substances react with dilute sulfuric acid to form salt? So sulfuric acid के साथ basically वो एक acid है, उसके साथ कौन सी चीज react करेगी? उसके साथ metal react करेगा, oxide, carbonate, ammonia, वो सब react करेंगे उसके साथ. जो भी चीज basic property show करती है वो सब react करेंगे. So based on that we can see कि magnesium करता है, magnesium oxide भी करता है, magnesium carbonate भी करता है, but magnesium chloride. Now, chloride is interesting. Magnesium chloride क्यों react करेगा किसी के साथ? Any ideas? This is going to be a precipitation reaction. You have not studied it yet. ठीक है? But हम इसको देख लेंगे when we study salts. So the idea here is that magnesium chloride can react with sulfuric acid. क्यों? अगर तो कोई insoluble salt बनता हो तो फिर तो react करेगा. तो magnesium sulfate बनेगा and HCl बनेगा. ठीक है? लेकिन ये दोनों soluble हैं, तो उसकी वजह से रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. सो इस वजह से कोई खास रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इस वजह से विल पिक वाटर इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ pH 4. ठीक है. व्हाट कुड बी pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? आपने वाटर ऐड किया. नाउ इन ए लेवल्स यू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस के pH चेंज हो रही है या नहीं हो रही, बट इन ओ लेवल्स एंड IGCSE यू अज्यूम दैट न्यूट्रल थिंग्स डोंट चेंज द pH. So that's why water is neutral, pH stays 4. A colorless solution is tested by the following reaction. Colorless है, हमें नहीं पता उसमें क्या है. Which characteristic is not of an acid? So basically हमें colorless solution मिला है और हमें नहीं पता वो क्या है, but we do want to check कि अगर वो acid होता तो फिर वो क्या करता. तो let's see. अगर वो acid होता तो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देता, जो कि वो फर्स्ट पार्ट में दे रहा है, तो ये तो एसिड हो गया. अच्छा जी. दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि a pungent smell is produced when ammonium carbonate reacts with it. Pungent smell is always of ammonia in our syllabus. So अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया गैस दे रहा है, तो ये क्या है? एसिड ही हो सकता, राइट? एसिड हो सकता ना, या नहीं हो सकता? इट कुड बी कि इट्स सिंपली समथिंग दैट ब्रेक्स डाउन अमोनियम आयन. ठीक है. सो इट डजंट हैव टू बी एसिड, इट could be a base as well because ammonium salts are basic. So इससे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है whether it's acid or not. लेकिन हमें ये पता है कि अमोनियम को कोई भी बेस ब्रेक डाउन करती है.
अच्छा आगे चलते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज एडेड, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर नहीं है। मिक्सचर इज वार्म, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कॉपर ऑक्साइड ऐड किया और उसको मिक्स किया। अब कॉपर ऑक्साइड के बारे में हमें ये पता है कि वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और सोल्यूशन इवेंचुअली ब्लू हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कॉपर ऑक्साइड इतना ऐड किया है कि हो सकता है वो उसके साथ रिएक्ट कर गया हो सकता है उसने सॉल्ट बना दिया हो, और कॉपर ऑक्साइड अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हो, एंड दैट इज व्हाई इट्स ब्लू। सो इट इज पॉसिबल कि कॉपर ऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल करता है, और उसके बाद बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज इन एक्सेस, रिमेंबर द कलर एट द एंड इज ऑलवेज ऑफ द थिंग इन एक्सेस। सो अगर कॉपर ऑक्साइड इन इन एक्सेस, सो देन इट विल टर्न ब्लू। सो डेफिनेटली दिस कुड बी एसिड, ठीक है। द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड दे तो डेफिनेटली एसिड है। सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी कैन सी बी जो है ना, ये एसिड की हरकत नहीं है। व्हाई? बिकॉज एसिड विल नॉट रिएक्ट विद अमोनियम because it's an acid. It can react with ammonium as salt, but not because it's acid. And secondly, ammonium is acidic. Ammonium खुद acidic होता है. Remember this. Ammonia is basic, but ammonium is acidic. So एक acidic चीज एक acidic चीज से react नहीं करेगी. Third, अगर एसिड रिएक्ट करता भी कार्बोनेट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड आनी चाहिए थी, विच डज नॉट हैव एनी स्मेल, इट्स ओडरलेस। सो ये अमोनिया आ रही है, तो ये सारी तीनों बातें हमें बताती हैं दैट इट कुड बी एनीथिंग बट नॉट एन एसिड। द ग्राफ शोज हाउ द पीएच ऑफ सॉइल इन अ फील्ड चेंजेस ओवर टाइम। सो वी कैन सी दैट द पीएच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए वी यूजली एड सम alkaline substances. What you need to remember from this is that calcium hydroxide, which is also called slaked lime solid, is added to soil to increase its pH whenever you have acidic soil. कोई acid rain हो जाती है उसको counter करने के लिए कुछ, तो this is something you should remember. So उसके बाद उसने उसको न्यूट्रल कर दिया, और उसके ये न्यूट्रल यहाँ पे हुई है वो 7 पे, और उसके बाद फिर वो एसिडिक हो गया और फिर वो थोड़ी सी एसिडिक ही है। So it is neutral at B, and that's what we'll say. Different salts could be made from a supply of sulfuric acid, HCl, copper, magnesium. Let's see. Sulfuric acid is H2SO4, HCl is HCl. You have copper, you have magnesium oxide, you have zinc carbonate. The real question is, how many of these will react? So H2SO4 and copper, no reaction. Why? Because copper is less reactive than hydrogen, and copper cannot displace hydrogen. So reaction नहीं होगा. HCl with copper, reaction नहीं होगा. Okay? So both of these reactions will not occur. Next, let's move on to the next one. H2SO4 with a metal oxide. Yes, metal oxides are basic. This will react. Metal oxide amphoteric भी होते हैं, but फिर भी वो react करते हैं. So this will react, and produce salt. Next. H2SO4 and metal carbonate. Yes, metal carbonates जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, salt and water produce करते हैं. HCl and that. Yes, they will react and produce that. Okay. And lastly, can you react both of these? भाई वो एसिड्स हैं, वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में नया सॉल्ट बना नहीं सकते. So based on this, our answer is B. Everybody clear? So the lines with blue, they are for base and acid. The line with orange, they are for carbonate and acid. Farmers add calcium oxide, lime, and ammonium salts to their fields. Calcium oxide क्या है? Lime है. Calcium oxide is basic, metal oxide है. Ammonium is acidic. ठीक है, तो ये basic है, and this is acidic. The compounds are not added at the same time because they react with each other. Of course, one is base, one is acid. They will react, and what will they do? They will release ammonia gas. Because ammonium, whenever it reacts with base, it produces ammonia. So what gas is produced? That's ammonia, definitely. Some reactions involving sodium are shown, which reaction does not involve formation of a base. Okay, so base क्या होती है? Metal carbonate, metal oxide, metal hydroxide. ये तीनों bases होती है. So यहाँ पे उसने क्या किया? Metal से start किया, metal oxide बनाया, तो ये तो base है. Metal oxide से start किया, metal hydroxide बनाया, ये भी base है. पानी ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. सोडियम से डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया. This also is produced by reacting sodium with water. So again, base है. This is not base, this is salt. So this is our answer, that this is when a base is not produced. Calcium hydroxide is added to neutralize the acid solution after chlorine has been added. So chlorine
acidic होती है when it reacts with, so it water, it produces HCl and HClO, but आपको वो formula याद करने की जरूरत नहीं है. You just need to know that chlorine is acidic. It is used to change the pH of swimming pools, so bacteria die. It is also added to water again because bacteria will be dead. वो उनकी cell wall को, sorry, cell membrane को break down कर देती है. Okay. Write in question for reaction of calcium hydroxide with HCl. So calcium hydroxide is this. Remember to write the formula correctly. How did I do that? Calcium is in group 2, hydroxide is hydroxide, -1. So cross multiply. Plus HCl. So calcium chloride plus water and 2 water. Because 2 hydroxide है हमारे पास, so इसको balance कर लेंगे. If you have any question at any point, please ask. Okay. Is this a neutralization reaction? Absolutely. You have hydroxide, you have hydrochloric acid, H plus and OH minus. So the ionic equation for neutralization is always this. In case you don't remember it, then what you can do is you can simply do the whole process of first finding the soluble salts, which we will study when we study salts, and then ionizing the aqueous parts, and third, cancelling the parts that are same on both sides. Okay, so that is how we do it. Okay, let's move on. Methylamine is a base which has similar properties to ammonia. When methylamine dissolves in water, the following equilibrium is set up. Okay, so अब इसमें थोड़ा सा आपने ज़हन में definitions को रखना है. What's a base? Anything that accepts hydrogen ion. What's an acid? Anything that releases hydrogen ion. Anything that gives proton. Oh, I just noticed that you were sending your answers. Okay, explain why methylamine behaves as a base in this reaction. Notice करें. This has NH2. Sir, because it accepts hydrogen. Excellent, excellent. बिल्कुल यही. और यहाँ पे हमें वो नजर भी आ रहा है कि इसने एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया. So when you're writing the answer, make sure you say H plus. Don't say hydrogen, don't say hydrogen, H2, just say, और खाली H नहीं लिखना, always say H plus. So it accepts proton या H plus, दोनों आप लिख सकते हो. Carbon dioxide dissolves in water to form a weakly acidic solution. ठीक है. So you can see कि एक तो weak है तो हमें equilibrium setup होता नजर आ रहा है, and secondly weak की definition भी हमें पता है that it ionizes partially. So not all of it reacts, some of it does. What is meaning of the term weak acid? So ionizes partially. So इससे मैंने क्या बताया? ये मैंने weak को define किया. And then to release या give या डोनेट, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, H पॉजिटिव, या आप प्रोटॉन कह सकते हो इसको. एंड दिस इज द टर्म एसिड. सो दो टर्म्स हैं तो दोनों को आपने डिफाइन करना है. एंड नोटिस एग्जामिनर समटाइम्स मेक्स इटैलिसाइजेस सम वर्ड्स, उनको टेढ़ा करके लिखता है. दैट बेसिकली मींस दैट देयर इज सम स्ट्रेस ऑन द. सो उनको फोकस करना है आपको. डिस्क्राइब हाउ यू कुड मेजर पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन अदर देन बाय यूजिंग अ पीएच मीटर. सो आपके पास पीएच मीटर नहीं, क्या करेंगे? So we have two options. या तो हम उसमें यूनिवर्सल Sir, इंडिकेटर. universal indicator. गो ऑन बोले बोले. हम या तो उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड Sir, कर हम देंगे. लोग उसमें universal. Yes. And what's the second option? We can dip litmus यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर इनटू इट. दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं. ठीक है. सो या तो आप ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. रिमेंबर टू यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, कोई और इंडिकेटर नहीं यूज करना. Sir, universal indicator methyl orange होते हैं ना? नहीं, मिथाइल ऑरेंज इज अ डिफरेंट इंडिकेटर. वो अपने तौर पे एक अलग इंडिकेटर है. यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर ही. अगर आपने यही नहीं ऐड करना तो फिर आप कह सकते हैं डिप पीएच पेपर. सो दिस इज वन मार्क. ठीक है. एंड सेकंड मार्क, एज हसन हैज सेड, वी मैच द कलर विद pH chart, and that is how we'll know. So whether you add a few drops or whether you dip the paper, you will see some color change, and that color change should be matched with the chart, and that's how you get both of these marks. Sodium hydrogen carbonate decomposes on heating to form carbonate. So ये heating के बारे में क्वेश्चन है. ठीक है. अब है हमने उसने हमें बता दिया कि क्या है.
गैस विच टर्न्स का लाइम वाटर मिल्की, दैट इज डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तो गैस रिलीज हो रही, तो NaHCO3 है। लेट्स सी, वो कह रहा है उसको मैंने हीट किया, ठीक है, उससे कार्बोनेट बना, कौन सा कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और कौन सा बनना, उसके अलावा गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की CO2 एंड वाटर and now we just have to balance everything here. I think if we do this it should be balanced. Yes it is. Suggest the color of indicator in the following compounds. Sodium hydroxide में litmus का कलर क्या होगा, अब it's a hydroxide तो ये बेस है, so litmus का क्या कलर होता है? सर ब्लू। Excellent, so this is blue here. And carbon dioxide is acidic, but notice that it says aqueous, which means उसको पानी में dissolve किया हुआ है, so वो acidic ही होगा, तो इसमें उसका कलर क्या होगा? Go on, tell me. Yes, सर red. इसकी समझ Is that what you're saying, Taha? यस सर, मुझे समझ नहीं है कि ये कैसे हुए रेड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एक्वस, इसका मतलब है उसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो जैसे वो वाटर में डिसॉल्व होगी वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगी, और उसमें लिटमस पेपर का कलर रेड होगा बिकॉज इट्स एसिडिक सोल्यूशन। और सर अगर यहाँ CO2 और एक्वस ना लिखा होता और गैस लिखा होता तो फिर वो क्या होता? नाउ लिटमस पेपर माइट नॉट फुली अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, बट इवन इफ इट डज, हम उसको डैम्प कर लेते हैं समटाइम्स, तो फिर वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, तब भी वो रेडी करेगा। ओके, नेक्स्ट, मीथाइल ऑरेंज एल्कलाइन सोल्यूशन में येलो होगा, और एसिडिक सोल्यूशन में रेड या पिंक होगा, आप दोनों लिख सकते हैं। I think this reaction we've seen. Nitric acid in the atmosphere can chemically erode buildings made from carbonate rocks. Of course, you have acid, you have carbonate, they will react, they will release carbon dioxide, it will break it down. Write in equation for the reaction of nitric acid, HNO3, and calcium carbonate. Okay, so it will happen. It's a carbonate, it releases carbon dioxide and calcium nitrate solution. Formula गलत नहीं लिखना, Ca2 plus NO3 1 minus, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी ऑलरेडी हैव अ 3 देयर, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे, प्लस वाटर। नाउ बैलेंस द इक्वेशन, नोटिस दैट दिस इज अ 2 mark question, so writing the correct formulas, balancing the equation, all of that is important. A student adds sodium hydroxide from a burette into a 25 cm cube of sulfuric acid, ठीक है, ब्यूरेट उसने क्यों यूज किया है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करना चाहता है कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ऐड करे, लेकिन 25 cm क्यूब कैसे यूज किया उसने, पिपेट, सो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम पिपेट यूज करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, सॉरी हाउ डू यू स्पेल इट, आई थिंक ETTE होता है, या, सो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू लाइक 25 या 10 या 50 वी यूज पिपेट, बट फॉर वेरिएबल वैल्यूज कि हमें कितना ऐड करना है हमें शुरू में नहीं पता, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं यूजिंग अ टैप, दैट इज ब्यूरेट। The student measures the pH of the mixture during the addition. During the addition यानी कि वो जैसे जैसे उसको ऐड करेगा pH इंक्रीज करती जाएगी। How it changes? It increases because you start with acid and you add ammonia or whatever base you have, sodium hydroxide. So उससे क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको न्यूट्रलाइज करते 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 7 तक आएगी, और उसके बाद वो अगर आप फिर भी ऐड करते जाएंगे तो फिर वो 7 से भी एक्सीड कर जाएगी। So overall it increases. Give an ionic equation to represent the neutralization reaction between sodium hydroxide and sulfuric acid. The key word in this question कि ये neutralization है, ये कोई और reaction नहीं है, ये neutralization है। इसका मतलब है इसमें H plus and OH minus react कर रहे हैं and you are getting water, and that is the thing you need to know. You don't need to remember कि अच्छा कौन सा salt, कौन सा acid, nothing. You just need to know कि neutralization है, तो वो तो hydrogen ion and hydroxide ion का ही reaction होता है। What's meant by the term acid? We have already seen this, that it is a substance that donates, yeah, gives proton, yeah, H positive. What's the difference between strong acid and a weak acid? Now, this is a difference question. डिफरेंस क्वेश्चन में आप दोनों की बात करते हो, एक की बात नहीं करनी, कोई भी डिफरेंस क्वेश्चन है, कोई भी कंपैरिजन क्वेश्चन है, हमने दोनों की बात करनी है। सो विल से स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइजेस fully and weak acid ionizes partially. You have already answered कि एसिड होता क्या है, इट डोनेट्स प्रोटॉन, ये हम लिख चुके हैं, सो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील लाइक कि नहीं मैंने लिखना है तो आप लिख सकते हो। मार्क्स आर फॉर कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में मैग्नीशियम, ठीक है, अब यहाँ पे आयनिक इक्वेशन किसकी होगी, जिन आयंस का रिएक्शन हो रहा है। सो
The actual reaction is between magnesium atom and hydrogen ion from sulfuric acid. So if you understand that, तो आप directly लिख सकते हो कि magnesium atom hydrogen ion को displace करता है. And you get hydrogen gas and magnesium ion. Displacement reaction. One weak ion goes out, a strong ion is made. But let's say you don't. Yes, Taha. सर मैं एक चीज पूछ लूं? जी जी पूछो पूछो. सर ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था इसमें आपने सर ये इतनी 2 लाइनों के हमें 3 मार्क्स मिल जाते हैं मतलब? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. 1 मार्क इसका है और 2 मार्क्स इसके हैं. टोटल 3 है. ओके सर. और लाइनें फिल करने के कोई मार्क्स नहीं होते. सही बात करने के मार्क्स हैं. ठीक है. सो कभी ओके. भी अगर आपने आंसर दे दिया है, चाहे वो एक लाइन में आया और 4 लाइंस उसने दी हुई हैं, दैट इज फाइन. वो एग्जामिनर हमें ज्यादा स्पेस समटाइम्स इसलिए भी देता है कि बच्चे गलती करते हैं एंड दे वांट टू कट इट आउट एंड राइट इट अगेन. अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. अब लेट्स सपोज आपको ये याद नहीं है कि ये क्या हो रहा है. आप सिर्फ उसको वैसे इक्वेशन लिख देते हो, तो आप लिख सकते हो H2SO4 प्लस Mg मेक्स MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. क्योंकि ये तो हमें उसने बताया हुआ है हाइड्रोजन गैस आ रही है, हमें ये भी पता है कि ये है, तो ये यही होने. अब आप इसकी स्टेट सिंबल्स लिखें. एसिड है तो एक्वस होगा, वाटर सॉल्युबल होते हैं एसिड्स. दिस इज सॉलिड, मेटल है, ये एक्वस होगा और ये गैस है. नाउ आयनाइज द एक्वस पार्ट्स. सो हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन. रिमेंबर, जो चीज एक्वस है इट विल बी आयनाइज्ड, बट जो चीज एक्वस नहीं है जैसे सॉलिड, this is not aqueous, so we'll just write it as it is. Similarly, this one is aqueous, so it will ionize, and this one will stay as it is, hydrogen gas. And now cancel things out. So अब यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो मैग्नीशियम को इधर से और इधर से कैंसिल कर देते हैं. बट रिमेंबर, पे अटेंशन, मैग्नीशियम इज अ सॉलिड, हेयर इट इज एक्वस. वो आयनाइज हो गया, वो सेम चीज नहीं रहा, वो आयन बन गया उसके. द ओनली थिंग दैट स्टेज द सेम इज सल्फेट. सो उसको आप कैंसिल करेंगे एंड वट एवर इज लेफ्ट दैट इज योर आंसर. सो आइडियली you should be able to identify that this is a displacement reaction. Magnesium is more reactive than hydrogen, it's displacing it, वो उसको निकाल रहा है, and that is the direct उन्हीं दो चीजों की ionic reaction होगा. But अगर आपको वो नहीं आता, you can do this working and give this as your final answer. Okay, this is a test that I gave to grade 10 in LGS when I was working there. Let's do this. ये क्वेश्चन हमने देखे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. एमसीक्यूज तो आई थिंक रिपीट सारे ही हुए हैं. ओह वाह, वी हैव जस्ट सॉल्व दिस. इंटरेस्टिंग. Oh yeah, let's do this one. Carbon dioxide is produced when dilute HCl reacts with carbonate. Barium hydroxide is an alkali. It reacts with HCl. How does the pH of HCl change as an excess? Notice, it's an excess. इसका मतलब है कि end पर सारे के सारा एसिड खत्म हो जाएगा, but we will still have barium hydroxide, and that is an alkali. So क्या होगा? pH it's acid की low होती है. HCl is a strong acid, let's say उसकी pH 1 है. आप alkali ऐड करते जाते हो, उसकी pH इंक्रीज करती जाती, न्यूट्रल हो जाता है 7. बट क्या 7 से ऊपर जाएगा? It यस सर. will go beyond 7. Yes, Taha, you're right. Because you have an excess of it, which means that it will be left over at the end. So at the end, you have alkaline solution. Excess is the key word here. So it increases from 1 all the way to 14 because you have a strong alkaline there. So a common mistake here is कि students कहते हैं कि वो constant हो जाती है, वो constant नहीं होती है because वो excess में. A compound is a salt if it, how do you know something is salt? Salts are things that have multiple ions. So let's see. They're always formed when acid reacts with base, so that is the confirmed thing. अच्छा, बहुत से students ये चीज बोलते हैं. This is wrong because carbon dioxide में 2 elements हैं. It's a compound. It's not salt. It can neutralize acid. Sure, there are salts that behave like bases and they can neutralize acid, but not all salts. There are neutral salts as well. Dissolves in water. There are insoluble salts and soluble salts. So that is also not correct for all of them. So D is the answer. Element X forms an acidic covalent oxide. Which row shows how many electrons there could be in the outer shell of an atom of X? हमें पता है कि वो एसिडिक कोवेलेंट ऑक्साइड बनाता है. ये दोनों बातें हमें बता रही हैं that X is a non-metal. So how many electrons could it have? It's a non-metal, so it could be group 5, group 6, group 7, group 8, but 8 तो react नहीं करता. And similarly group 4 भी हो सकता है. So 6 and 7 are ideally correct, and 1 and 2 cannot be because that will make it a metal.
Which reaction will result in a decrease in pH? अच्छा, pH आपने डिक्रीज करनी तो मतलब आपने उसमें एसिड ऐड करना, ठीक है. So let's see. Add calcium hydroxide. Remember, metal hydroxides are basic. So adding calcium hydroxide will increase the pH because वो तो base है. Add citric acid to sodium hydrogen carbonate solution. तो ये तो दोनों आपस में react कर जाएंगे unless you have citric acid in excess. अगर citric acid excess में होगा तो उसकी pH को कम करेगा. एंड सेकेंडली, जैसे जैसे वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तब भी तो उसकी pH को कम करेगा, न्यूट्रल तो कर ही देगा और कुछ ना करे तो इस वजह से बी इज द आंसर. ये उसको कम करेगा, 7 तक लाएगा, अगर एक्सेस में हो तो 7 से नीचे आ जाएगा. Adding sodium chloride to silver nitrate, pH does not change. They are both salts. ना वो base है ना वो acid है. Adding sodium hydroxide to HCl, this is neutralization. So if you have HCl, then the pH is low. If you add sodium oxide, pH increases. Here it stays the same. The diagram shows the pH value of 4 solutions. Okay, so P is acidic, Q is neutral, R is slightly basic, and S is strongly alkaline. Which of these are alkaline? So R and S are both alkaline because they're both, ठीक है, एक strong हो सकता है, एक weak हो सकता है, लेकिन दोनों alkaline हैं. Which substance reacts with sulfuric acid to form salt? I think we have seen this, that it's magnesium, magnesium oxide, magnesium carbonate, and magnesium chloride नहीं होगा because magnesium chloride forms soluble salt और कोई insoluble salt create नहीं होता. तो जब दो salts react करते हैं तो अगर तो insoluble salt create हो रहा है तो फिर तो reaction will stay, लेकिन अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो वापस चला जाएगा. विच इज नॉट टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. अगेन, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? मेटल के साथ हाइड्रोजन, बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन, कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं. उसके अलावा उनके लिटमस या यूनिवर्सल या मीथाइल के कलर्स भी आपको पता है, थाइमोफ्थलीन का कलर भी आपको याद करना है. सो लेट्स सी, दे रिएक्ट विद एल्कलीज प्रोड्यूसिंग वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. सो दैट इज ऑब्वियसली एसिड नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर ये बी है इसका आंसर. They react with all metals पर. ये बात गलत है. Yes, ताहा आपने बिल्कुल सही पिक किया. Can you give me a metal that will not produce hydrogen with acid? सर Any क्या पूछे? metal, any metal that will not produce hydrogen when it reacts with acid. सर कॉपर हो Copper. गया, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है हाइड्रोजन से. Very good, very good. So copper, as you both have said, copper is one answer. Gold, silver, platinum, ये सारे ऐसे ही होंगे. And obviously the best way to know, as Taha said, it is below reactivity, below hydrogen, the reactivity series. Which of the following does not produce carbon dioxide? अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस नहीं होगी? एडिंग HCl टू कार्बन नहीं होगी भाई, कार्बन ने कुछ भी नहीं करना. एडिंग HCl टू कार्बोनेट, यस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. बर्निंग कोक, कोक क्या होती है? कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. So it will produce carbon dioxide, and petrol, it also produces carbon dioxide. Water is added to test tube containing sulfuric acid or pH 4. What could be the pH of resulting solution? हमने assume करना है कि water neutral होने की वजह से pH को change नहीं करेगा. So C. So there's a pH of following solution. HF, acid. So pH will be, you can say 4, 3, 2, 1. Acidic होनी चाहिए. Although HF is a weak acid. Interestingly, ब्रेकिंग बैड में उन्होंने HF को बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड शो करवाया था, एंड द रीजन फॉर दैट वाज दे डिड नॉट वांट टू गिव पीपल आइडियाज. वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को कोई ऐसी बात बताएं कि जो खुदा ना खास्ता क्राइम में यूज हो सके. सो दैट इज वाई उन्होंने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो एक्चुअली बहुत वीक एसिड है, उसको शो में ऐसे दिखाया था कि जैसे वो तो भाई बहुत ही जबरदस्त चीज है. NaO2, मेटल ऑक्साइड. सो मेटल ऑक्साइड होने की वजह से दिस विल बी अ बेस, सो यू कैन से लाइक हाई 12, 13, 14, कुछ भी आप बेस कर कह सकते हो. We have seen this question. We've seen this question. You will start to see patterns in the question. जैसे यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. And yeah, that brings us to the end of this worksheet.